Hello everyone. So let us start with the session of environment PYQ discussion. So today is the session number 4 and let us begin with the first question of the day. So the very first question of the day is, which one of the following describes the term social cost of carbon? Okay, so you have to tell that what is the social cost of the carbon. Since this question was that time it appeared in the news. So because of that, it was there in the UPSC exam. Okay. Now, how can you solve it? So whenever you are solving such questions, so you have to just consider that what are the statements and which of the statement is providing the detailed meaning of the statement. So the answer for this question would be answer number A, long-term damage done by the ton of CO2 emissions in a given year. See, this question was there in the news as well. So because of this, if you know, you know. If you not, so there would be high chances that you will do it wrong. Okay, now let us move to the another question. So the next question is, if a particular plant species is placed under Schedule 6 of the WPA Act 1972. Okay, so if a particular species is under the Schedule 1, so what it means? So WPA ke pehle there were 5 schedules. Okay, sorry, 6 schedules the pehle. Okay, so उसमें जो fifth one was the warming section, जिनको आप hunt कर सकते हैं. So rat mice are there, so वो उसमें आते हैं, and 6 were there जो licensed वाले होते थे. ठीक है, तो शेड्यूल जो 6 है उसके अंदर एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है उस प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए. ठीक है, now let us see how could we have solved this question. So see, under any circumstance, किसी भी प्लांट को आप उस सिचुएशन में नहीं कल्टीवेट कर सकते. So this is a extreme statement, so that will go incorrect. Then another one is that is a GM modified crop. अब देखो जो GM modified crop वाला stance है, so again जो WPA schedule 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी schedules जो है they appeared in the PYQ section as well. So just have a tab over the schedules of the WPA. एंड ये वाला जो है, ठीक है, सच अ प्लांट इज इन्वेसिव, सो ऐसा नहीं कहते शेड्यूल 6 में. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए. ओके, दिस क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट. ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एरिया? सो लार्जेस्ट एरिया इज अंडर नागार्जुन श्रीशैलम, एंड रेस्ट यू शुड नो द लोकेशन. ओके, लाइक सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, रणथंभौर, राजस्थान. Then Cobbett is in UK, so what river flows through and all those things you should know very well. Okay, now CGWA, so this question was there. Okay, and इसमें जो ये 36% है, ठीक है, so that is not 36%, वो data keeps on changing, but that time it was in news, so because of this you can just eliminate this statement. But the thing here is, now for the next coming prelims, what you should remember is the CGWA was formed under the EPA Act. And now anyone can tell me the year of EPA, when EPA came? Okay, so EPA came in the 1986 and WPA 72. Okay, so पहले WPA आया था and then came the EPA. Okay, and EPA, eco-sensitive zone, is also established under EPA Act 1986. So ये point बहुत ज़्यादा important है. Point number 2, CGWA was formed under EPA Act. Okay. Then this question, India's desert national park. So this we have discussed already. Then जो 2 district है वो कौन-कौन से है? बाड़मेर and the जैसलमेर. This is known for the project Godawan. GIB is their Great Indian Bustard. Okay, and yeah, ये third statement already given. Okay. So this we have discussed already. Jaisalmer, Badmer is provided here. So here you go. Okay. Benzene pollution. So benzene pollution जो होता है, okay, वो wooden furniture इसमें नहीं रहता है. Okay. So wooden furniture is something some of the aspirants have they might have eliminated this option. So benzene उसमें नहीं रहता है. Though earlier the answer was D. Like various institutions provided the answer D.
but UPSC came with the option number A as the answer. Okay. Some of the questions have been discussed already. Okay, now let us discuss this question. Consider the following statement, and this is from 2019 exam. So the very first statement is agricultural soils release NO2, cattle release ammonia, poultry industry release nitrogen compounds. Okay, अब ये जो स्टेटमेंट है तीनों वी कैन सी कि यहाँ पे ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो. ऑल्सो दिस इज द बेसिक gaseous cycles. Okay, so you should have a tab over CO2 means carbon cycle, then comes the hydrogen cycle means water cycle. So just have a tab over these cycles, prepare them well, because there was a question in 2021 prelims as well on the phosphorus and sulfur cycle. So you can see that how these cycle keep on appearing in the alternative years. Okay, so just remember it. Then biomass के time कौन सी release होती है? This was something I provided the example of ozone here, that yes, ozone is released, but many of the institution came up with the answer that no, ozone is not released. Okay, so ozone को eliminate करके they provided the answer might be A or C, but the actual answer came out to be D. Okay, so D was the correct answer, and it is. Okay, so जो ozone है, see, if 1% or 0.01% also releases, so that also will be counted as the burning sensation. So the answer would be option D. Again, this question has been appeared in some or another way, so just remember what are the guesses, and see, each and every guesses cannot be recalled at the whole. So just remember, like अगर burning हुआ है तो ठीक है, अगर मान लो ये रिलीज हुई है, ये नहीं भी हुई है, तो हाउ वुड यू नो कि ये होती है नहीं होती? तो अगर थोड़ा सा भी है तो इट विल बी काउंटेड एज द रिलीजिंग एलिमेंट. Okay, the next question is about the deposits of the methane hydrate. So methane hydrate के सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली जब न्यूज आई थी, सो आर्कटिक में उसके जो एक्सट्रैक्शंस है वो किए गए थे, वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिले थे. Now let us see the statements. What are the statements provided here? The very first statement is global warming might trigger the release of methane gas from these deposits. Okay, so अगर global warming होती है तो उसकी वजह से methane gas है release हो सकते हैं. Why? So because अगर global warming होगी तो that will melt the substance, that water will be melted, so that might release. Okay, for example, this is the ocean, this is the sea, the entire surface has been it is frozen, but since the global warming is increasing, so it might melt and it might release. Okay, so that will make the statement 1 as correct. Okay, now second statement, large deposits of the methane hydrate. So this is what I'm telling you, that it was in news that time. So second statement is true. Methane जो है that oxidizes to CO2 after a decade or 2. So after a decade or 2, it will oxidize into the CO2. Okay. Again, जिसने भी साइकिल्स को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा गैसियस साइकिल को, ये क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाते हैं सॉल्व करने. And until and unless you find any clueless thing that it might not or it may, so in that situation, just consider कि it may it can be oxidized, it might release or something. Then microbeads. So this question was in 2019 prelims, and this is a easy question. Parabeans and microbeads के regarding इन दिनों बहुत ज्यादा prevention and awareness campaigns चलाए जा रहे थे उस टाइम में. So that was in news, and that makes the statement A to be correct, marine ecosystem, because whatever toiletries you are using, your shampoo, your hair shower, your body gels, so in that, microbeads are contained. So microbeads act as a scrub to your body, and that provides the exfoliation application to your body. So because of that, it is there, it is contained in those products. Okay, and yeah, that is quite a simple question. And if you know, okay, ये microbeads जैसे हैं, ठीक है, अगर आप कोई और एक अलग से कोई आइडिया लगा सकते हैं, या if you are following any technique,
then might you solve, but this was a basic question. It could be done with the current affairs or basic knowledge of the current affairs. Okay, so this we have discussed already. ये चंबल वाला eliminate हो जाएगा. And then this one we have discussed already. Naya Kripaga. So this was in news again, and it was covered by only IAS and Vision IAS. So this was okay. Then suggestion, the use of the Sears cloud thinning technique and injection of sulfate. So yeah, okay, option D is correct. And ये भी डिस्कस हुआ था. वन हॉर्न राइनो जो है वो इंडिया में नहीं, आसपास भी मिलते हैं. देन डबल ये सेंट्रल एशिया में ही मिलते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सो आंसर वुड बी ए. देन टेम्परेट, कंप्लीटली इन टेम्परेट. सो ये भी हमने कल बहुत डिस्कस किया था डिटेल में. सो मानस नहीं होगा असम में, एंड असम डजंट लाइक द टेम्परेट जोन. देन नाम दफा नेवरा. ओके, नेवरा अगेन नो, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में, सो इट डजंट लाइक देयर. And Valley of Flies in UK, and because जो UK है, UK lies in the Alpine Arctic zone, so yeah, that makes this answer correct. But suppose अगर यहाँ पे completely नहीं होता और tropical वगैरह होता, ठीक है, so in that case नाम दफा could have been the answer. Momentum, so yeah, this is purely like no, एक observation वाला question है. Like no, अगर आपने fact पढ़ा है, this is a factual question, so if you know, you know. Okay, page UN, this is from 2018 prelims, and this appeared in the news once, but that was quite new to many ones. Pakhui is another name for Pakhudi. Pakhudi. Okay, so yeah. Just remember for upcoming exam, in case they just like no print this question again in the very much same manner. एंड ये भी डिस्कस हुआ था जो बैगाज है, बैगाज लाइज इन द छत्तीसगढ़ एमपी इन छत्तीसगढ़. एंड पीवीटीजी, सो या पीवीटीजी पे फिर 2019 में क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये पहले इस फॉर्म में आया था. द वेरी नेक्स्ट ईयर दे आस्क्ड ऑन द पीवीटीजी इन द डायरेक्ट मैनर. सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द पीवीटीजी. सो पीवीटीजी की 75 ट्राइब्स आर देयर. सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश में. Okay, so these are some of the facts. Just remember. Bagas का भी हमने here it is also mentioned Chhattisgarh and Madhya Pradesh. So we discussed it already. Okay. Let us discuss this question now. So how is the NGT different from the CPCB? So CPCB और NGT में you have to just make a difference. So NGT जो है वो 2010 के एक्ट से बना है. Okay. 2010 के एक्ट से बना था. सो एनजीटी इन्होंने कहा कि ठीक है इससे बना है, तो फिर सीपीसीबी किससे बना है? तो सीपीसीबी भी जो है वो एक एक्ट में आता है, एंड दैट इज द वाटर एक्ट. ओके, ये वाटर एक्ट से, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट, वो तो इसी की वर्डिंग पे है. ठीक है. 6th मार्क्स एक्सटेंशन. सो यस, ये भी इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं है. इन केस यू आर जस्ट रीडिंग अबाउट द एक्सटेंशन दोज डेज इन 2018 वे बैक टू 2018-19. कार्बन फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर एफोरेस्टेशन और लाइक नो प्लांटेशन इन द ओशनिक सिस्टम. So increased plant growth due to concentration of the CO2 in the atmosphere. So yeah, this option is correct. Okay. And then okay, so this was easy question. 2018 में ही आया था, and 2019 में जो microbeads वाला आया था, we have just seen that. Okay, microbeads एक्सफोलिएशन के पर्पस से वो यूज किया जा सकता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं टॉयलेटरीज बेसिकली. तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30. सो एनीवन वुड लाइक टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 30? अगेन 30 भी न्यूज में था. क्लोसोपिस जूलीफ्लोरा. ओके, सो ये एक टाइप का इन्वेसिव स्पीशीज है, इन्वेसिव, एंड वाइडली यूज्ड इन द कॉस्मेटिक्स. तो ये माइक्रोबीड्स के लिए स्टेटमेंट सही है. इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी, जहां पे भी ये कल्टीवेट होगा तो ये सही है इन्वेसिव के लिए. एंड इट एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स. ओके,
And CCAC to reduce short-lived climate pollutant is a unique initiative of G20 group of countries. So ये G20 का नहीं है, I think ये UNEP का है, ये G20 का नहीं है. And also जो भी organization वाले questions होते हैं, when they say कि ये इस organization का है, so in mostly उस cases में it is wrong. ओके. एंड सीसीएसी का फोकस जो है वो सारे जो शॉर्ट लिव होते हैं ना, हाइड्रोफ्लोर हो गया, ब्लैक कार्बन हो गया, सूट हो गया, तो ये सूट ओके. सो ये सभी शॉर्ट में आते हैं, ठीक है, बी एंड या यूएन. अगेन ये कुछ क्वेश्चंस है, दे बिलोंग टू द फैक्चुअल कैटेगरी. सो बी वेल वर्स्ड विद द फैक्ट्स विच आर इन न्यूज, विच आर ट्रेंडिंग इन न्यूज, so it might help you in solving the questions easily. Okay. And if it is possible, okay, algae based biofuel. So basically there are 4 generations, 1 2 3 4. 1 contains food crops, 2 contain non-food, 3 contain the algae, and 4th one contains the carbon sequestration. Okay, so ये question जो है ये 3rd stage से पूछा इन्होंने, 3rd stage biofuel. So it is possible to produce algae-based biofuels, but what are the likely limitations of developing countries in promoting this industry? So what are the hindrances basically which is limiting the development of this industry? So okay, production जो है algae का ये possible है सिर्फ seas में. Why so? Continent पे भी algae होता है. Okay, so let us do this statement as coming to second. Setting up an engineering requires a high level of expertise. Since this technology is quite new, so yeah, ये statement काफी सही लगता है. Okay, the 3rd statement, economically viable production necessitates the setting up of large-scale facilities which may raise ecological and social concerns. So ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि statement गलत ही होगा. Okay, because this is a quite natural statement. So let us do वन थिंग की, लेट अस अज्यूम ये सही है, ये सही है. ओके, 1 को इनकरेक्ट करते हैं, तो 1 को भी इनकरेक्ट करते हैं, तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड सी, एंड बी डजंट साउंड टू बी इनकरेक्ट. सो लेट अस गो विद द ऑप्शन बी एज आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. एंथ्रोपोजेनिक एमिशन होता है अगर CO2 का, तो वो कौन कौन से साइट्स है जिससे कार्बन सिक्वेस्टर किया जा सकता है? Abundant and uneconomic coal seams, depleted oil and gas reservoirs, and 3rd one is subterranean deep saline formations. Now, which of the following or which of these can help in carbon sequestration or which can act as the potential site? Easy question, hai? Option D is the correct answer. Okay, then comes the option of those things. So, black carbon, what is brown carbon, what is blue and green carbon. सो ब्लू कार्बन पे क्वेश्चन आया था 2021 प्रीलिम्स में. ओके, व्हाट इज ब्लू कार्बन? सो जितने भी ओशन आपके ब्लू इकोनॉमी वाले जितने भी होते हैं वो सभी जितने भी सिक्वेस्टर कर लेंगे. ओके, ब्लैक में जो वो कार्बन एमिशंस वाला आ जाता है. ग्रीन में फॉरेस्ट या जितना भी ग्रीन कवर होता है आपका बेसिकली वो सिक्वेस्टर करता है. फॉरेस्ट हो गया तो वो सब आ जाएगा ग्रीन इकोनॉमी, green carbon. Okay, then comes the bioremediation technique. What are the advantages of bioremediation technique? Okay, so anyone would like to discuss this question? Question number 35. Am I audible to all? Just clear me this. Yes, you are audible. Okay, so question number 35 we were discussing. So what are the advantages? ठीक है, let us assume कि अगर इसमें कोई भी बहुत ज्यादा एलिमिनेट वाला स्टेटमेंट है तो let us do that first, because our purpose is just to discuss if there is a question like this, how it can be solved in easy manner. Okay, so suppose एक बार first statement basic लग रहा है, let us go with the second statement. Any contaminant which contains the heavy metals such as cadmium, lead can be readily and completely treated by. Suppose कि completely है, it makes the statement so much extreme. Okay, let us assume कि ये गलत है.
It can be used to create microorganisms specifically designed for bioremediation. Since this technique was used, and if anyone remembers oil zapper, okay, oil zapper जो है उसका पर्पस यही होता है यूज करने का. And one more is there, olivarus. Okay, let me type it here. Olivarus. This is some of the spelling. Okay, in case it is wrong, do correct me later. Okay, so olivarus is some of the name. Okay, तो ये भी यूज होता है जैसे पहले ऑयल जैपर हुआ करता था, तो ये ऑयल जैपर भी एक PYQ है, माइट बी 2016 सैम्पलिंग. ठीक है, सो एज्यूम सेकंड गलत है, सेकंड को गलत करते वी आर लेफ्ट विद AC. अब जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा, बिकॉज बेसिकली इसका जो मोटिव है वो यही है, तो एज्यूम करते हैं कि आंसर सी इज द. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो इन सितु होता है, ठीक है, इन सितु एक्स सितु वो जो स्पार्जिंग होता है, बायो ऑगमेंटेशन होता है, बायो वेंटिंग होता है, और ये सभी जो है दीज आर सम ऑफ द वेज टू लाइक टू clear the wastage pollutant. So BOD is standard criteria for pollution as in the aquatic ecosystem. So ये भी दो होते हैं, एक होता है BOD. Just my screen is visible. So एक होता है BOD, एक होता है COD. Okay, so BOD में बेसिकली बायोडिग्रेडेबल लिए जाते हैं ओनली बायो, और इसमें बायो नॉन बायो दोनों, ठीक है, दोनों होते हैं. तो बिकॉज इसमें ओनली बायो होता है, इसमें ओनली नॉन बायो होता है, तो सॉरी इसमें दोनों होते हैं, उसमें खाली बायो होता है, तो इस वजह से ये जो है ये काफी एग्जॉस्टिव, काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक मैनर है टू चेक द पोल्यूशन लेवल्स. ठीक है, BOD एंड COD. एंड व्हेन BOD अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, एनीवन कैन टेल मी? अगर BOD ज्यादा है तो व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन? PK Shiva, can you please tell me what would be the levels of DO? DO के लेवल कम होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड में है, बहुत ज्यादा डिमांड है ऑक्सीजन की, तो उस वजह से जितना भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा ओशन में तो वो कम हो जाएगा. ठीक है, okay, this is the last question of the day. So due to some reasons, if there is huge fall in the population of species of butterflies, what could be its likely consequence? So pollination जो है plants का वो adversely affect हो जाएगा. ठीक है, ड्रास्टिक इंक्रीज हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन का, सो ऐसा नहीं होगा. एंड फॉल पॉपुलेशन ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ वास्प. ठीक है, तो सी अगर बटरफ्लाइज कम हो जाएगी तो उनकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट आएगा. ओके, सो 1 and 3 वुड बी करेक्ट, 2 एलिमिनेट हो जाएगा. इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थोड़ा बेसिक रहते हैं, इट हेल्प्स यू टू एलिमिनेट मॉल. Okay, so almost we have discussed 10-15 questions are discussed today, and we'll be continuing tomorrow with the next set of the questions, and all the sessions would be uploaded on the YouTube in case you have missed any discussion in between. So thanks a lot for joining the session.